Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to learn some basic concepts of national income. Particularly, we are going to focus on classification of goods. Now let's understand first how goods are classified. So they are classified into two categories, final goods and intermediate goods. Final goods, they can be further categorized as consumption goods and capital goods. So in this video, we are going to learn about each type of good one by one with the help of an example. First, we have final goods. Now before we come to the definition, we are going to first discuss the characteristics. So first, they are ready for final use. Final goods, they are ready for final use by their final users, which means no further value is yet to be added to this good. It is ready for the final use, which means it has crossed the boundary line of production. जब भी हम कहते हैं क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि उसमें फर्दर कोई और वैल्यू ऐड नहीं करनी. इट डायरेक्टली सेटिस्फाई द नीड्स. दे आर इंटेंडेड फॉर इमीडिएट यूज बाय द फाइनल यूजर. तो ये दो पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ईदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. फाइनल गुड्स का दो पर्पस होता है, या तो कंज्यूमर उसको कंजम्पशन के लिए लेता है या फिर फर्म या प्रोड्यूसर उसको इन्वेस्टमेंट की तरह परचेज करता है. ठीक है. Then national income and domestic income includes value of all final goods and services. Since you know we are discussing this topic here in context to national income, so when we will be discussing the three methods to calculate national income, we always have to keep in mind that only and only value of all final goods and services will be included in the calculation. Okay. Now coming to the definition. So final goods, they are those goods which are either used for consumption, that is satisfaction of human wants, or investment, that is for use in further production. So final goods के दो पर्पस होते हैं, या तो कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट. अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड. हाउस होल्ड कोई भी गुड खरीदता है वो कंजम्पशन के लिए खरीदता है, अपनी फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदता है. ठीक है. ना तो वो उसको रीसेल करेंगे मिल्क को हाउस होल्ड, ना वो उसको फर्दर किसी और गुड की प्रोडक्शन में यूज करेंगे. सो इट विल बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन, सो इट इज अ फाइनल गुड. सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी कार परचेज्ड बाय अ टैक्सी ड्राइवर. नाउ कार विच इज परचेज्ड बाय टैक्सी ड्राइवर विल बी एक्टिंग एज एन इन्वेस्टमेंट. वो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी टैक्सी ड्राइवर की. ठीक है. क्योंकि वो उस कार को कम से कम 10-12 साल के लिए यूज करेगा अपनी फाइनल सर्विस प्रोवाइड करने में. So it is an asset which is purchased by a taxi driver which will help him in providing his final service. So it will be acting as an investment. So it is a final good. So final good जो हम खरीदते हैं उसके दो पर्पस होते हैं, या तो consumption या investment. Next we have intermediate goods. Again, before coming to the definition, let's understand the characteristics first. Number one, not ready for use by their final users. अब इसका मतलब क्या है कि ये अभी भी फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है, यानी कि हम इसमें अभी भी वैल्यू ऐड करेंगे तब ये फाइनल यूज के लिए रेडी होंगे. सो दे आर विद इन दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. अब जो भी गुड बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन जिसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं करी है, यानी कि अभी उसमें और फर्दर वैल्यू ऐड करनी है, सो वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दिस गुड, दैट इज इंटरमीडिएट गुड. थर्ड, कंज्यूम्ड और ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. आपने यूजुअली देखा होगा कि कोई भी जो इंटरमीडिएट गुड होता है वो या तो प्रोडक्शन प्रोसेस के ड्यूरेशन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है या फिर वो फाइनल गुड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द एग्जांपल्स, राइट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दे आर यूज्ड अप इन द सेम ईयर. इंटरमीडिएट गुड्स, दे आर यूज्ड अप इन द सेम ईयर. They are not added to both national income and domestic income. ना तो हम calculation of domestic income में और ना ही calculation of national income में हम intermediate good की value को include करते हैं, because ये already final good की value में होता है. ये भी हम डिटेल में समझेंगे जब हम सीखेंगे कि national income calculate कैसे करते हैं. Now coming to the definition. Intermediate goods are those goods which are either used as raw material or for resale. तो इंटरमीडिएट गुड्स के दो पर्पस क्या हैं, या तो वो रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है या फिर वो रीसेल के लिए यूज किया जाता है. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, दे आर यूज्ड विद इन द सेम ईयर. एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको फर्दर. हियर माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज मिल्क
purchased by a sweet shop owner. Now here the sweet shop owner is going to use milk in production of sweets and other milk products. So milk here is acting as a raw material. It will be consumed as well as transformed during the production process, and it will be used within the same year. So here milk is acting as an intermediate good. Second example, car purchased by car dealer. Now car dealer is going to use this car for further resale, right? Unless like taxi driver who was using the car as an investment, as an asset in providing his final service. तो वहां पे जब टैक्सी ड्राइवर ने कार खरीदी थी वो फाइनल गुड था. यहाँ पे जब कार डीलर इसको परचेज कर रहा है फॉर फर्दर रीसेल, इट विल बिकम इंटरमीडिएट गुड. वन क्वेश्चन मस्ट हैव अराइज्ड इन योर माइंड नाउ that how to classify good as final good or intermediate good. So we classify goods as final goods and intermediate goods on the basis of their end use. Now first, before going to that topic, let's discuss two basic examples here. Let's say there is a tea stall owner and the final good which he is selling is tea. So what all goods will be required in production of tea? Tea powder, milk and sugar. Now these three, they are intermediate goods. Why? Because they are acting as raw material. They will be transformed during the production process and will be used up in the same year. So these three are intermediate goods for the tea stall owner, right? And tea is the final good. Second example, wheat and wheat flour, which is used by a factory owner who is producing bread. Wheat and wheat flour, they are intermediate goods because they will be transformed, they will be further processed into a final good which is bread. So here wheat and wheat flour, they are acting as a raw material, so they are intermediate goods. And what is the final good? It is bread. Now if you will look at the examples carefully, the same good can be categorized as intermediate good or final good. Yes or no? Tea powder, milk, sugar, when purchased by a tea stall owner, they are acting as intermediate good. But what if the same tea powder, milk and sugar, they are purchased by a household? Then they will be used for consumption. So it will become final good. Similarly, wheat and wheat flour, when purchased by a factory owner who is producing bread, they are acting as intermediate good. But what if the same wheat and wheat flour is purchased by the household? Then it will be used for consumption, so they will become final good. So that is what I was discussing, that how do we classify goods as intermediate goods and final goods? We classify them on the basis of the end use of the good. Now this can be further explained with the help of few more examples. Blackboard used in a school. Blackboard जो स्कूल यूज कर रहा है, अब स्कूल कंज्यूमर नहीं है, तो ब्लैक बोर्ड जो है वो स्कूल कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल तक यूज करेगा. सो इट विल बी एक्टिंग एज इन्वेस्टमेंट फॉर द स्कूल. तो इन्वेस्टमेंट है, सो इट विल बिकम फाइनल गुड. पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर. पेपर विल बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बुक्स. Paper here is acting as a raw material. It will be used up in the same year. So it is a intermediate good. Car purchased by a household. अब हाउसहोल्ड कोई भी चीज खरीदता है वो कंजम्पशन के लिए खरीदता है. सो सिंस इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, इट इज फाइनल गुड. एक्सपेंडिचर ऑन इंजन ऑयल बाय अ कार सर्विस स्टेशन. कार सर्विस स्टेशन इंजन ऑयल को रीसेल के लिए भी यूज कर सकता है, या फिर जो वो कार की सर्विसेज करेगा उसमें इंजन ऑयल को यूज कर सकता है एज अ रॉ मटेरियल. सो इट विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल and as raw material, so it will be categorized as intermediate good. Now I hope this is clear how to categorize a good as final good or intermediate good on the basis of their end use. We discussed in the beginning that final good can be further categorized into two: consumption goods and capital goods. So first, consumption goods. As the name suggests you, goods which are used for the consumption are consumption goods. ठीक है, so these are the goods which are purchased by the consumer for satisfaction of human wants. This can be further categorized as durable goods, non-durable goods, services. Durable goods, goods which are for relatively longer time span, जिसको आप 5 से 6 साल या फिर 3 से ज़्यादा साल के लिए यूज करते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, व्हीकल्स एक्सेट्रा. ऐसा नहीं है हमने 1 साल कार खरीदी, नेक्स्ट ईयर हम फिर से जाके लेंगे. नो. नेक्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स.
In some books you will see non-durable goods is categorized in two categories, semi-durable and non-durable. तो सेमी ड्यूरेबल वो जो हम कुछ महीने तक यूज कर सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल जो सिर्फ कुछ दिन तक चलते हैं. तो सेमी ड्यूरेबल का एग्जांपल हो सकता है फूड, क्लोथिंग, टॉयलेटरी, और नॉन ड्यूरेबल का एग्जांपल होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हियर आई हैव टेकन as a combined as non-durable goods category, so which are for relatively shorter lifespan. यूजुअली हम इन गुड्स को 3 साल या 3 साल से कम में ही यूज कर लेते हैं. डेली एसेंशियल्स जो होते हैं वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स का पार्ट होते हैं, फूड, क्लोथिंग, टॉयलेटरी एटसेट्रा. लास्ट इज सर्विसेज. दे आर intangible goods. Intangible is something which cannot be touched or felt. ठीक है, so they are intangible goods and example can be auto repairs and हेयर कट. सर्विसेज यानी कि आप उन्हें छू के या फील करके नहीं देख सकते. सो कंजम्पशन गुड्स की ये 3 कैटेगरीज हैं, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज. कैपिटल गुड्स. दे आर यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट्स बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. सो एसेट्स विच आर परचेज बाय प्रोड्यूसर और जो फर्दर उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं. एक जो क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होगा वो ये कि क्या कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, बिकॉज तो कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? फर्स्ट इज दे आर नॉट ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. दे विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. एंड सेकेंड, when we calculate the value of final good, it includes value of all intermediate goods, but it does not include the value of capital good. For example, machinery purchased by a factory owner who is producing car. Now machinery is going to help the producer in the production of car. Machine will not be consumed during the process of production. It will not be transformed. So it is a capital good. I can explain this further with the help of another example. Let's say instead of machinery, factory owner is purchasing steel. Right, now here steel will be acting as a raw material. It will be used up in the process of production of cars. Steel will be transformed into car. Right, so steel will be acting as an intermediate good. But machinery, it is a capital good because it is an asset which is purchased by producer, which will help in the production process of goods and services. Example of capital goods can be machines, building, tools, equipment, vehicles, etc. So we can conclude final goods and services produced in an economy in a given period of time, they are either in the form of consumption goods or capital goods. तो जो भी फाइनल गुड्स हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस करते हैं या तो वो कंजम्पशन गुड्स होते हैं या फिर कैपिटल गुड्स. That's all for today. Thank you. Please like and share with your friends. And for more such content, subscribe and hit the bell icon. Hello everyone.